Now take you live to the Arun Jaitley Stadium. Joining us, our correspondent Rahul Rawat. Rahul, we saw a lot of interest in that India versus Australia game, the opener. This is India's second game, against a relatively weaker opposition, you'd say, in Afghanistan. But is the interest still alive? Well, Nikhil, it is very much alive, and I think it's the afternoon and it's a weekday. We'll get to know because around the stadium I can see a lot of people in color blue who've come here to support, and a lot of people actually may trickle in later in the day. Maybe they are waiting for the toss to happen, and you know how the Indian fans love Indian batting. So perhaps that could be one of the reasons why the crowd will be slow to come into the stadium. But Nikhil, we know the fans, the craze for cricket, but there's a super fan with me, Ram Babu. We all know everywhere the Indian team is going. He's been following the Indian team. अच्छा, अब मैंने अभी सुना आप एक स्लोगन चिल्ला रहे थे, गा रहे थे यहाँ पे, जरा हम लोगों को बिल्कुल बिल्कुल स्लोगन है वर्ल्ड कप के लिए स्पेशल. बस यही कहेंगे, इंडिया 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 का नारा है, वर्ल्ड कप हमारा है, भारत माता की जय. जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा. इंडिया का नारा है, वर्ल्ड कप हमारा है, भारत माता की जय. स्टूडियो से पूछ रहे हैं कि चेन्नई वाला मैच जो था उसमें तो काफी लोग आए थे, करीब 32,000 से ज्यादा लोग आए थे. अफगानिस्तान के साथ है, वीकडे है, आपको लगता है कि वैसा ही माहौल बना पाएंगे? बिल्कुल वही माहौल बनेगा, और एक भी सीट खाली नहीं है क्योंकि ये सेंटर में है, दिल्ली का है, कहते हैं ना विराट कोहली का गढ़ है ये, और पूरी देश से लोग यहाँ पे आए हुए हैं. हम भी हर एक जगह फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी सीट खाली नहीं है, और सब एक्साइटेड है ये वर्ल्ड कप का मैच देखने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाड़ी प्लेयर से मिलना हुआ. बिल्कुल, कल हम लोग प्रैक्टिस में थे, सब खिलाड़ी से थे. कल विराट कोहली प्रैक्टिस पे नहीं आए, विराट कोहली क्योंकि उनका होम ग्राउंड है तो बिजी रहे होंगे. बट रोहित शर्मा जड्डू, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार, सब लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस करी है. आज कौन जिता रहा है आपको? बिल्कुल, क्योंकि हमारा ओपनिंग पेयर यहाँ पे चलना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा, ईशान किशन जो क्या चूक गए थे चेन्नई में रन बनाने से, वो यहाँ पे वो उसकी भरपाई हो, क्योंकि ओपनिंग पेयर, क्योंकि शुभमन गिल इस मैच में नहीं है क्योंकि वो बीमार चल रहे हैं, और पूरा हम चाहेंगे वो जल्दी फिट होकर टीम इंडिया में वापस आए, क्योंकि बहुत की प्लेयर हैं टीम इंडिया के, बहुत बड़े प्लेयर हैं, और ओपनिंग स्टार्ट आज चलेगा तो 300 प्लस रन जरूर बनेंगे टीम इंडिया के. Yeah, I think, Nikhil, 300, the last time the match happened here, you know what happened, over 400 runs were scored, in fact, but Ram Babu, I think, is being a little conservative, saying that over 300, but that would also depend on the toss. Sorry. Rahul, just let us know a bit about the Indian team as well. We heard from Ram, and those are reports as well, talking about a lot of Indian players that did not actually come for practice. Was it because of the heat in Delhi, or because it's workload management, or is it because it's a relatively weaker opposition? It was an optional practice for India, I believe. Nikhil, a combination of both, of everything that you've been talking about. Of course, they played their last game on 8th. Then the following day they travelled, and on the eve of any match, usually, it's always an optional practice. So a majority of the players chose to skip the optional practice. But yes, a few of them were here. Who didn't get a chance. For example, Ravindra Jadeja with his batting, a lot of things, and also the heat. It's very hot. They've been traveling 3 back-to-back matches. In fact, Chennai has already happened, then in Delhi, and next is Ahmedabad. And this is, in a matter of, say, about a week, they'll be playing 3 matches in 3 different cities, and cities where temperatures are usually very, very high.